अथ व्यग्रतीकं रहस्यं ऋषिरुवाच। ॐ त्रिगुणातामसि देवी सात्विकीया त्रिधोदिता सा सर्वाश्चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीर्ययत योगनिन्द्रा हरेरुक्ता महाकाली तमोगुणा मधुकेटभनाशार्थं या तुष्टावां भुजासनः दशवक्त्रा दशभुजा दशपादाय जनप्रभा विशालया राजमाना त्रिंशल्लोचनमालयास स्फुरतदश न द्रष्ट्रांसा भीमरूपा विभूमिप रूपसौभाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा मया महाश्रियः। खड्गबाण गदाशूल चक्रशंख भुशुण्डिभृत परिघंकार मुखं शीर्षं निश्च्योतध्रुधिरन्दधो एषा श्रावेश अण्विमाया महाकाली दुरत्यया आराधिता वशीकुर्यात् पूजा कर्तुश्चराचरं सर्वदेव शरीरेभ्यो या आविर्भूता मितप्रभा त्रिगुणासा महालक्ष्मीः साक्षान्मही समर्दिनीश श्वेतानना नीलभुजा सुश्वेतस्तनमण्डला रक्तमत्या रक्तपादा नीलजङ्घो रुरुन्मदा सुचित्रज घनाचित्र माल्याम्बर विभूषणा चित्रानुलेपनाकान्ति रूपसौभाग्यशालिनी अष्टादश भुजा पूज्या सासहस्र भुजा सती आयुधान्यत्रवक्षयन्ते दक्षिणादः करक्रमात् अक्षमाला चकमलं बाणो असिहिकुलिशं गदा चक्रं त्रिशूलं परशुः शंखो घण्टा च पाशकः शक्तिर्दण्डश्चर्मचापं पानपात्रं कमण्डलुः अलङ्कृत भुजामेभिरायुधेकमलासनाम् सर्वदेव मयीमीशां महालक्ष्मी मिमां नृप पूजयेत् सर्वलोकानां स देवानां प्रभुर्भवेत् गौरीदेहात् समुद्भूता या सत्त्वैक गुणाश्रया साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुर निबर्हिणी तदोचाष्ट भुजा बाण मुसलेषु लचक्रभृत शंखं घण्टां लाङ्गल्यञ्च कार्मुकं सुधाधिपः एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति निशुम्भमथिनी देवी शुम्भासुर निबर्हिणी इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तिनान्तवपार्थिव उपासनं जगन्मातुः पृथगासां निशामय महालक्ष्मीर्यदा पूज्या महाकाली सरस्वती दक्षिणोत्तरयोः पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयं वीरयचिःस्वरया मध्ये रुद्रगौर्या च दक्षिणे वामे लक्ष्म्या हर्षिकेशः पुरतो देवतात्रयम् अष्टादश भुजा मध्ये वामे चास्या दशानना दक्षिणे अष्ट भुजा लक्ष्मीर्महतीति समर्चयेत् अष्टादश भुजा चैषा यदा पूज्या नराधिपः दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा कालमृत्यु च समपूज्यो सर्वारिष्ट प्रशान्तये यदा चाष्ट
भुजा पूज्या शुंभासुर निबर्हिणी नवास यः शक्तयः पूज्यास तदा रुद्र विनायको नमो देव्या इति स्तोत्रेर्महालक्ष्मीं समर्चयेत् अवतार त्रयार्चायामस स्तोत्रमन्त्रास् तदाश्रयाः अष्टादश भुजा चैष्या पूज्या मही समर्दिनी महालक्ष्मीर्महाकाली सेवपोक्ता सरस्वती ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोक महेश्वरी महिशांत करियेन पूजितास जगत प्रभुः पूजये जज गतान धात्रीय चंडिकां भक्तवत्सलाम् अर्घ्यादिभिरलङ्कारैर्गन्धपुष्पैः तथा अक्षतेः धूपैर्दीपैश्च च नैवेद्यैर्नानाभक्ष्य समन्वितैः रुधिराक्ते न बलिना मांसेन सूरया नृप बलिमांसादिपूजेयं विप्रवजर्या मयेरिता तेषां किल सुरामांसैर्नोक्ता पूजा नृपकवचित प्रणामा च मनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना सकर्पूरेश्च ताम्बूलैर्भक्तिभाव समन्वितैः वामभागे अघ्रतो देव्यास् छिन्नशीर्षं महासुरं पूजयेन्महिषं येन प्राप्तं सायुज्यमीशया दक्षिणे पुरतः सिंहं समग्रन्धर्ममीश्वरं वाहनं पूजयेद्देव्या घृतं येन चराचरं कुर्याच्च स्तवनधीमां स तस्य एकाग्रमानसः क्रतः कृताय जलिर्भूत्वास्तुवित च ऋतेरिमेः एकेन वा मध्यमेन नेकनेतरयोरिह चरितारधन तु न झपेझ जपय्य छिद्रमवाप्नुयात् प्रदक्षिणा नमस्कारान् कृत्वा मूर्ध्नि कृताय जलिः अक्षमापयेज जगद्धात्रीम् मुहुर्मुहुः रतान्द्रितः प्रतिलोकय्य च जुहुयात् पायसनति लसर्पिषा जुहुयात् स्तोत्रमन्त्रैर्वा चण्डिकायै शुभं हविः भूयो नाम पदरदेवीं पूजयेत्सु समाहितः प्रयतः प्राय जलिः प्रहवः प्रणम्यारोप्य चात्मनि शुचिरम्भा वैदिशां चण्डिकान्तन्मयो भवेत् एवं यः पूजयेद्भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीं भुक्त्वा भोगान् यथा कामं देवी सायुज्यमाप्नुयात् यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलां भस्मीकृत्यास यपुण्यानि निर्दहेत् परमेश्वरी तस्मात् पूजय भूपाल सर्वलोक महेश्वरीं यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि इति व्यकृतिकृत्स्यं जगदम्बार्पणमस्तु।